अन्य आधारभूत भौतिक परिसंपत्तियों के सर्जन से वंचित है। आधारभूत सुविधाओं जैसे ग्राम स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण आंतरिक सड़कें, शिक्षा एवं गांवों में रोशनी की व्यवस्था में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। स्थानीय नागरिकों के रोजगार एवं जीविकोपार्जन हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों का अभाव है। यह क्षेत्र पुरातत्व, पर्यावरण संरक्षण, कला संस्कृति एवं पर्यटन विकास की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। मगरा क्षेत्र में भीलवाड़ा जिला शामिल रहा है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर की 58 ग्राम पंचायतों व नगर पालिका के 25 वार्डों को मगरा क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाकर विगत कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर सौतेले व्यवहार किया। विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के 33 ग्राम पंचायतों की पंचायत समिति कोटड़ी तहसील को भारत सरकार की नीति आयोग ने अति पिछड़ेपन के तथ्यों को देखते हुए भारत सरकार की संपूर्णता अभियान के दौरान आकांक्षी ब्लॉक में शामिल कर कैंपों का आयोजन किया गया। अतः विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर की 58 ग्राम पंचायतों व नगर पालिका जहाजपुर के 25 वार्डों को मगरा क्षेत्र में शामिल करते हुए मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत समग्र विकास किया जाए। धन्यवाद। श्री कुलदीप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष सुलेख प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट मोहनपुरा कोटली द्वारा आबादी के पास चलाई जा रहे पत्थर पीसने के क्रेशर को हैवी ब्लास्टिंग को बंद करने एवं मोहनपुरा के बचे हुए शेष भाग जोधपुरा को पुनर्वास करवाने के संबंध में महोदय निवेदन करना चाहता हूँ। उपरोक्त विषयांतर्गत वे एक महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जोधपुरा संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना पिछले 785 दिनों से लगातार जारी है। अपनी समस्याओं के संबंध में संबंधित उच्च अधिकारियों को अनेकों ज्ञापन देने के उपरांत भी ग्रामवासियों की समस्याओं का प्रशासन द्वारा कोई समाधान नहीं किया गया। अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा मोहनपुरा कोटपुरी द्वारा मुख्य आबादी से 80-85 मीटर की दूरी पर पत्थर पीसने के क्रेशर एवं हैवी ब्लास्टिंग दिन रात कार्य करने से ध्वनि प्रदूषण का कारण आमजन को सुनने की क्षमता कम हो गई है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। आबादी के नज़दीक क्रेशर में दिन रात चलने से निकलने वाले डस्ट से गांव में रात दिन कोहरे व धुंध की तरह छाई रहती है, जिससे ग्रामवासियों को सांस लेने में परेशानी हो रही है एवं गांव में दमा, श्वास, चर्म रोग एवं एलर्जी जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। मोहनपुरा गांव में बचे हुए हिस्से जोधपुरा, जिसे अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है, के निवासियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकृत भूमि पर बसे हुए गांव का पुनर्वास दर्शा रखा है, जबकि हकीकत में केवल मोहनपुरा के 120 घरों को ही पुनर्वास किया गया है। मोहनपुरा के ही मोहल्ले जोधपुरा का पुनर्वास बाकी छोड़ दिया गया है। अब दूसरी यूनिट लगाई जाने से बाकी बचे गांव के सामने मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया है। क्रेशर निर्माण से पूर्व दिनांक 12/2022 को ग्रामवासियों द्वारा इस क्रेशर को लगाने का विरोध भी किया गया था। 4 मिनट से 30 मिनट दे दिए और दिनांक इससे बड़ा न्याय हो नहीं सकता। 28/2023 को क्रेशर लगाने की अनुमति प्रदान कर दी। प्रदूषण विभाग की अनुमति के बिना NOC के चलाना पाया जाना कारण 19/2024 को प्रदूषण विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को बंद कर दिया गया। इसकी उचित कार्रवाई होनी चाहिए एवं बचे हुए गांव मोहनपुरा के मोहल्ले जोधपुरा का पुनर्वास होना जनहित में सही होगा। अतः प्रक्रिया के नियम 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट मोहनपुरा कोटली द्वारा आबादी के पास चलाई जा रही पत्थर पीसने के क्रेशर एवं हैवी ब्लास्टिंग को बंद करवाने या साथ साथ ग्राम मोहनपुरा को बचे हुए शेष भाग जोधपुरा का पुनर्वास जनहित में सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पर्ची श्री गोविंद प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और राजस्थान विधानसभा का 200 नंबर का विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पर 150 गांव से ग्रामीण क्षेत्र आसपास से आते हैं और लगभग आबादी 1,30,000 के लगभग है। तो मैं आपसे और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बरसों से 30 बेड का चला रहा है, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को तुरंत प्रभाव से
उसको जिला अस्पताल बनाने की मैं अनुरोध करता हूं और सदन की कार्रवाई 2 बजे तक भोजन अवकाश के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने ठान लिया है कि अब से जब भी किसी को पैसे भेजेंगे तो पहले उसका यूपीआई आईडी वेरीफाई करेंगे। वाह, दिल जीत लिया आपने। अब आप गर्व से कहो, मैं मूर्ख नहीं हूं। करियर वो चुनो जो फैमिली के साथ मैनेज कर सके। Who will listen to you? Everyone, because I will make my opinions matter. The world will always question your choices. Make the right one to begin with. Welcome to the B School, Jaipuria. Issues that affect us collectively, namely climate change. But Bharat cannot hope to be a relevant stakeholder, forget even being a dominant stakeholder on these important topics, until Bharat regains its parichay, its identity. And therefore, every internal challenge and external challenge that Bharat faces to its identity has consequences not just for Bharat, but also for the rest of the world. Bharat is not the light of the East, Bharat is the light of the world. This statement doesn't come from a source of jingoism or patriotism merely because I'm born here, but because each time the world has looked for guidance on key issues which are existential in nature, one way or another, it is Bharat which has actually provided the answers. The fact of the matter is, Europe came out of dark ages through Islamic invasions, but the knowledge that was transmitted to Europe was Bharatiya knowledge through the Islamic invaders into Europe. So I keep reading a lot of history, but I also read
let's say, philosophical takes on history. Why did Bharat go through that extremely painful, excruciating phase from 712 AD onwards or even before, and we are still going through it? I don't think we have fully come out of it. I hope we are in the process of coming out of it. What is the purpose of it? There is a New Zealand photographer who has become a fan of Bharat, who has come to Bharat often, who has visited ashrams across the world, and he wrote a fantastic book. His name is Howard Murphet, and if possible, please do Google him up. He was a World War II photographer who then came to Bharat and decided to make this place his home. He said, while the historical take could be that Bharat has suffered invasions, the philosophical take is, but for these invasions, perhaps the knowledge of Bharat may not have gone out fully. I'm not saying that the invasions were right, but if you look at it from a different perspective, the knowledge of Bharat has actually spread to the rest of the world subsequently, significantly. And it continues to do so, that even the best of minds from the most advanced of nations do not have answers to questions and challenges of consciousness. They have to come back to Bharat, because the one form of engineering that we have mastered and we have been masters of for generations and for millennia is inner engineering. We have understood that better than anybody else. It takes you back to another issue, that when you're discussing artificial intelligence, which fundamentally looks at replicating human consciousness in a different, let's say, non-transient or non-sentient being, so to speak, Bharat should have been at the forefront of the discussion on artificial intelligence and consciousness, but it is still not there yet. And without the tempering effect of Bharat, without the responsible worldview of Bharat, artificial intelligence is capable of wreaking the third or the fourth wave of havoc on human minds. The Industrial Revolution did not have a conscience to it. The space age did not have a conscience to it. The nuclear age did not have a conscience to it. Now the AI age will have no conscience unless Bharat steps up and takes its own responsibility. All the previous ages have been about mastering something that has been external to us, namely the resources outside, whether it is space or whatever it may be. But artificial intelligence can be perhaps the most devastating, let's say, revolution, so to speak, unless it is tempered by let's say, the limiting effect of dharma. If AI does not have a dharmic bent of mind, and by that I don't mean a Hindu bent of mind, I mean a righteous bent of mind with a certain understanding of rights and responsibilities, what it can do to our consciousness is incredible and, according to me, positively scary. Take, for example, a simple case study of the impact of Facebook, X, and TikTok on the young generation. And as parents, you know that you have lost your children, or at least their bandwidth and their mind spaces, to social media significantly. Because each of these platforms is designed to hook people through addiction. And the kind of dopamine kicks that social media is capable of delivering on a regular basis, I don't know of a single drug that is capable of doing it. Not that I've ingested any drug. And Bharat needs to नदियां बदलती जा रही हैं नालों में, जंगलों को काटकर बनाई जा रही हैं बिल्डिंग्स, इकोसिस्टम होता जा रहा है जीरो सिस्टम। यह है पूरी दुनिया का एक बड़ा सच। सारी परिस्थितियां इशारा कर रही हैं बर्बादी की ओर। इन मुश्किल हालातों से लड़ रहे हैं वातावरण के रक्षक। इस नए सीजन में जानिए कैसे प्रकृति को बचाया जा रहा है आपके लिए। इको इंडिया सीजन 11 premieres 8th Feb, Saturday 8 p.m. and repeats Sunday 8 p.m. Watch on Epic. What should be our approach to technology? Technology without conscience is tyranny. And we are gradually moving in that particular direction. Now let's connect all these meta topics, these earth-shattering topics, to the topic that has been given to me.
I have been asked to speak on the topic of Bharat, civilization to nation, roughly translating to the journey of Bharat from Sanskriti to Rashtra, because the translation for nation is not Rajya, it is Rashtra. So let me try and understand these words for my own sake, and let's see if I'm able to make sense to the audience. Sanskriti, Rashtra, and then Rajya. संस्कृति से निकलता है राष्ट्र, उस राष्ट्र की कल्पना से निकलता है राज्य। संस्कृति और राष्ट्रीयता के बगैर राज्य नहीं निकल सकता है। The political unit, which is the Rajya or the state, is the last mile of that particular journey, where it starts with civilization and then it moves gradually towards the conception of a nation as to who we are as a people, and from there comes the identity of what is the political unit in question here. The problem of the last 75 years or perhaps the last 150 years when it comes to Bharat's history has been the peculiar insistence that when you think of Bharat or India, not even Bharat for God's sakes, only India, and when I say gods, I mean the apostrophe comes after the S because it's a plural, not a singular, is that we are being told focus exclusively on the Rajya. And इस संस्कृति और राष्ट्र और इस राज्य के बीच में कोई relationship नहीं है. There is no relationship between our civilization, our nationhood and our statehood as India. We are being told पूरी तरह से आप इसको तोड़ दीजिए. And इसको तोड़ने का जो जरिया है, that is secularism. Bharat or India for that matter is being told that secularism requires India to give up its roots and its fundamental identity, and we are being asked to exist in vacuum with no sense of who we are. Which is why it is important to understand that जब आप संविधान की बात करते हैं, संविधान is not a document that exists in isolation or in vacuum. It must be understood in the prishtabhumi of civilization and nationhood. It is that background, it is that context which informs Bharatiyata. If today we are told that India as a state does not have a civilizational identity of its own, and dare I say a religious identity of its own, we are being asked to empty this vessel called the consciousness completely. And the human mentality or the consciousness is such that it can never remain empty. You're being put through a systematic process of emptying your mind so that something else can take its place. The question is, what will take its place? What is this gold going to be replaced with garbage or filth? That is the question you need to ask yourself. Therefore, the purpose of secularism in the last 75 years, or at least since its introduction in the preamble in 1976, has been to accelerate the process of emptying your consciousness of its civilizational identity. And each time we are told that if you don't do this, then your secular credentials and your peace-loving credentials are in serious question. You are put in a moral trap. And you're being asked to choose between secularism on the one hand and Sanskriti on the other. My entire endeavor in public domain is to present arguments through the prism of Samvidhan to say, इन दोनों के बीच में अंतर विरोध नहीं है. लेकिन अगर है और आपको इनमें से किसी एक विकल्प का चुनाव करना पड़े, तो हर बार आपका चुनाव सिर्फ संस्कृति की ओर होना चाहिए. क्योंकि अगर संस्कृति है तो संविधान रहेगा. और ये संविधान पूरी तरह से नहीं, लेकिन in some ways इस संस्कृति की पैदावार है, if not fully.
My reading is that the document is a mixed bag, and I don't use the word mixed bag in a negative sense. I'm just saying it has contributions from across the board. Because it is the very same Samvidhan, the so-called secular document, which also speaks of cow protection. How can a secular Samvidhan, which is supposed to be completely anti-Sanatani according to some people, speak of cow protection? I've given this example in the past, so I'll repeat